हाय अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें ब्रीफली हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में क्या क्या होते हैं। अगर हम थोड़ा सा और गौर करेंगे इसमें, वी हैव द स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ neuron. It's a elongated tree-like structure. It has been divided into three parts: head, middle, and the root part. Consider my hand and my hand just like it is a neuron, and these are the projections of the dendrites, leaf-like structures, and this is the center part where the nucleus exists. We can call it the somatic soma part, cell body, and the terminal part is the axon, and this is the root part. First is the leafy part, and this is the uh, trunk part, and this is the root part, and all the three carry the information to other parts of the body and receive and carry information. As concerned to this dendroid part, these are the leafy structures. They receive the information, they are placed near the cell. They receive the information from the neurons, okay? And this is a trunk part, tree trunk part, where the nucleus lies. DNA is housed, protons are formed, and these protons are to be carried through dendrites and axons. Okay, and the central part, the last part, terminal part, is the axon, the root end of the neuron, and they carry the electrical messages, and that message is called the action proton. Okay, well, these are the three important parts of the neuron, important parts which carry our actions of the body. As you know, neurons are the nerve cells. Neurons are nerve cells. They are in fabric material, and there are about, as I have told you about earlier, there are about 86 billion neurons present in our human brain. अगर हम ये कहेंगे, neurons have been, it has been divided. I mean to say, it has a types. Neurons has a types. We have the sensory neuron and motor neuron. Sensory neuron, which carry the information from outer part of the body to the inner part in the central nervous system में, they are attached to the sensory functions. I mean sound, touch, and they carry this information to the central nervous system. इस तरीके से मोटर न्यूरॉन जो होते हैं, they control our voluntary actions, moments and actions, postures, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैरी मैसेज करें टू अदर पार्ट्स. यानी कि सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बॉडी की टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, जो सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे साउंड है, टच है, इनको हमें एक्टिवेट करके हमें इंफॉर्मेशन देते हैं बाहर से. और इस तरीके से वी हैव द मोटर न्यूरॉन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैरी करता है इंफॉर्मेशन टू द अदर पार्ट्स, टू द मसल्स, ग्लैंड्स एंड स्किन. यानी कि ये हमारे पोस्चर और मोमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी मोमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. मोटर वही होता है जो कंट्रोल करते हैं अबाउट द एक्शंस, अबाउट द postures. So neurons are itself playing a very important role in the development of the brain. Neurons को डिवाइड किया गया into four
into four major types. One is a unipolar, second is a bipolar, multipolar and pseudopolar. इनकी एक स्ट्रक्चर होती है. If we talk about the unipolar, it has only one structure extending from the somatic body, यानी कि सेल बॉडी से इसकी एक ही ब्रांच निकलती है. So it is a unipolar. And second one is a bipolar. It has the two structures, axon and dendroid, and it branches out from the cell body, from the soma. And multipolar, it has a more than two parts. And pseudopolar, so like this, though they are different in structures as per their existence. So my dear students, आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है, ये कहाँ पर होते हैं, बॉडी में क्या क्या करते हैं. तो इस तरीके से अगर हम न्यूरॉन फंक्शन की बात करेंगे, हाउ न्यूरॉन वर्क्स, न्यूरॉन को हम कहते हैं नर्व सेल. नर्व सेल, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड सेल. इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल भी इसको कहा जाता है. इट इज़ almost every time active in carrying the electrical messages of neurons from one neuron to the other neurons. अगर creation of new neurons होते हैं, new neurons in the brain, उसको कहा जाता है न्यूरोजेनेसिस. न्यूरोजेनेसिस मीन्स जनरेशन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स. वो मोस्टली एडल्ट्स में होता है. So in short, you have read about the nervous system, you have you get to know about also its parts, what is the structure of neuron and dendrites, axons क्या होते हैं. तो इस तरीके से न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं. तो यू गेट अवेयर, लिटिल बिट अवेयर. जितनी भी कोशिश हमारी है, थोड़ा सा आपको ये हम प्रोवाइड करते हैं. होप यू विल अंडरस्टैंड इट. थोड़ा सा इसको आपको मार्क करना है कि मैंने क्या कहा था. और आगे आने वाले पोर्शंस में, लेसन्स में आपको थोड़ा सा टच और कर लूँगा अबाउट द अदर पार्ट्स. तो अभी के लिए मैं आपको बाय बोलूँगा और ये रिक्वेस्ट है कि कीप योर सेल्फ सेफ एंड अदर्स जो आपके आजू बाजू में हैं, जो आपके यहाँ पड़ोसी हैं, उनको भी थोड़ा सा ये कह दीजिए कि आप घर पर ही रहिए और घर पर ही अपनी वर्क कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच. ओके.